Okay, so distance is a scalar quantity which is having only magnitude. Displacement is a vector quantity which is having magnitude and as well as the direction. Okay, so write the difference between distance and displacement. Distance and displacement. ସେ ଯୋଉ ଆଶାର ଭଉଣୀ କଥା ହେଲେ ଫୋନ କରିଛି। The distance lekho total path length in distance, right? Total path length, first point, total path length then our first point lekho shortest distance between initial and final point. Distance of first point होची total path length, displacement रे लिखंतु shortest distance between initial and final point. A point लिखो, it is a scalar quantity and it is a vector quantity. Distance रे लिखियो ମୁଁ ଆସଲ କହିଲେ ବିକଜ ଏ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଏମିତି ନଉଛନ୍ତି ମୁଁ ମୋ ପ୍ରତି ଭଲ କଲି ତୁ ମୋ ପ୍ରତି ଏମିତି ଅନ୍ୟାୟ କରିବୁ it is a scalar quantity, it is a vector quantity लिखो okay तापर लिखो distance लिखो it is always greater than or it is always greater than or equal to 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 magnitude. It is always greater than or equal to magnitude. अच्छा डिस्टेंस टा सब बेले कौन रहिबो डिस्प्लेसमेंट ठारो ग्रेटर रहिबो yes or no एई जो पास टा मु जदी जीबी so if it is taken as a 5 kilometer it will take the 2 kilometer yes or no okay so always the distance is greater than or equals to displacement okay next right its magnitude is always displacement रे लिखिबो its magnitude is always less or equal to distance travel okay distance that you travel so what are the distances there okay see that it is a very important point what the distance you cover the distance is not decrease with the time when time is decrease your distance is not decrease okay the time ta kami gale distance ta mate mu jodi if I cover the distance suppose मैं ए path में गया मैं 2 मिनट लगा okay तो इस path में गया
अगर मेरा रूट क्लियर है तो मैं 2 मिनट में होम से ऑफिस पहुंच गया। अगर मेरा ट्रैफिक जाम है तो मुझे 10 मिनट लगा, तो वही डिस्टेंस मैं कवर करूंगा। अगर 2 मिनट में टाइम लेता हूं मेरा डिस्टेंस, ओके, सो द डिस्टेंस यू कवर ये डिक्रीज हो। इज इट क्लियर? तो टाइम अनुसारे हमर डिस्टेंस टा केबे डिक्रीज होबो नाही। टाइम टा जदी डिक्रीज होची डिस्टेंस डिक्रीज होबो, किंतु डिस्प्लेसमेंट रे सेटा डिक्रीज हो। ओके, डिस्प्लेसमेंट मींस व्हाट? इट इज हैविंग ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। इफ टाइम इज डिक्रीज इट इज आल्सो डिक्रीज, बट distance is not decrease. Okay, so এরপর লেখো displacement can decrease with time. Displacement can decrease with time. Displacement time change হলে displacement change হবে। ওটা directed path is called the displacement। हाँ, तार फॉर्मूला कहिबी तते देखियो केमति टाइम डिक्रीज हेले डिस्प्लेसमेंट टा केमति डिक्रीज हो। बुझिला? नोट रे लिखो तो नोट, सो गिव ऑन ए नोट, तले गोटे नोट दो। ओके, सो पुट ऑन ए नोट हियर, नोट, important point, the direction of displacement is from initial position, okay, position to final position। Next point, right? Next point, displacement is also defined as change in position। Displacement is also defined as change in position, that is your final position minus initial position, final position minus initial position, final position minus initial position, that is a displacement। Okay, so now I will show you all the things, distance and displacement, some problem we have to cover। The first question is what? A particle travels from travels from minus this position to 17-meter zero position, then to minus position, zero means origin, find the total distance traveled and displacement okay, so now so you are starting from minus 15 0, okay, next to your final position is what? Or 0, then again you have to come to the position
So suppose this position is x is equals to 0. This is a 0 position. That's the thing we define. Okay. Then it comes to the position, this position. So that is called as the -2 and 0. बुझी होची माने गोटे पाथ आमे ए पाथ रो एठी गले पुनी आमे रिटर्न कले केते -2 0. ओके -2 मीटर. ओके तार डिस्प्लेसमेंट केते आसीओ व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट फर्स्ट योर स्टार्टिंग पॉइंट इज वेयर स्टार्टिंग पॉइंट मोर केते अछि तो मोर एठी हमें रूल दा बाहर करिवा xf फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन तो फाइनल पोजीशन मोर केते अछि फाइनल पोजीशन हमें कोठी पहुंचले लास्ट रे -2 को पहुंचले तो वी आर ट्रैवलिंग टू द -2 एठी कोन हला फर्स्ट वी आर मूविंग टू दिस देन टू दिस बुझी होची ना बुझी होनी तो ए क्वेश्चन ता तुम छाडी दउछो मु एठू बाहरिली एठी पहुंचली तापर मु ए जगह को आसिली तो मोर फाइनल स्टार्टिंग पोजीशन कोटा रहला स्टार्टिंग पोजीशन हला जो फाइनल पोजीशन कोटा रहला -2 स्टार्टिंग पोजीशन केते आसीबो -15 एटा केते आसीला 2 प्लस सॉरी 2 ला कोन हिजिबो -2 plus 15 so that gives you what that gives you result that is 13 meter. It is a displacement. So what is the distance then? What is the distance then? So displacement हमें फाइनल रो इनिशियल बुझिला ना कि बुझी पालो ने तो कि बुझी पालो ने ओके सो नेक्स्ट ए संजीव समझ में आ रहा है ओके सो नेक्स्ट हम इसका क्या निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट के बाद हम इसका निकालेंगे क्वेश्चन लिख लिए सब हाँ रिमूव करता हूं क्वेश्चन ना तो नेक्स्ट हम इसका क्या निकालेंगे ना हम निकालेंगे डिस्टेंस ट्रैवल कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल किया डिस्टेंस ट्रैवल तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया तो पहला कितना डिस्टेंस स्टार्टिंग हुआ 15 देन गया 17 ओके यहां से 17 देन 17 देन +2 बुझियला 15 नो स्टार्ट हला 17 पुनी बैक आसिला पुनी ठीक आसे तो 15 plus 17 again 17 then 2 so that means what that is 51 पहले ना बुझियला ना बुझ पेलन एउटू स्टार्टिंग हला एटी सब देखो डिस्टेंस रो कोनोसी नेगेटिव रहिबो नाही displacement is having opposite direction displacement is having a direction distance is not having any kind of direction so minus is also considered as a plus okay so first it is starting distance is covered 15 it is origin 15 then moving to the 17 okay then 15 then 17 then again it is coming to here then this position प्रथमे एउटू स्टार्टिंग हला एठी असला 15 पुनी गला 17 पुनी एठी आसेला देन 2 तो 15 17 17 2 that is 51 बुझियला नहीं इट इज जस्ट अ एग्जांपल इट इज नॉट अ क्वेश्चन इट इज जस्ट अ एग्जांपल तुम जानिबा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इज नॉट अ क्वेश्चन नहीं देख प्रथम आमर आसो कोटा यही पोजिशन को आसो ना प्रथम गला केते 15 कवर कला 15 से कोडी कवर करूची ओरिजिन को तापर एउठू एति गेला 17 बुझी होची पूरी वापस आसी केते डिस्प्लेसमेंट करिवो ना कोडा -2 पोजीशन दियाला पोजीशन 2 माने का हो तो 17 से ओरिजिन जाय हो ना 17 से आप -15 जाय कोइ देखो फर्स्ट क्वेश्चन तुमको कोन देला -15 देला नहीं सर 15 आगो सुनु क्वेश्चन ता देख क्वेश्चन में कोन अछि
फास्ट कह मते क्वेश्चन कौन अछि -15 अछि तो -15 आसिले से कोठू स्टार्टिंग करियो -15 0 रु -15 ऑपोजिट डायरेक्शन को से गला तो 15 किलोमीटर कवर कला तापरे अगेन से कोन कला कोठी की जीवो 17 को जीवो +17 कवर कला बुझी होची 17 कवर कला परे अगेन कोठी आसीबो कोठी आसीबो -2 को आसीबो -2 को आसिया पूर्व प्रथमे से केते डिस्टेंस कवर करिवो 17 कवर करके ठीक आसीबो ना देख एठी एटा हला ओरिजिन पोजीशन बुझियला एटा हला 0 0 रो स्टार्टिंग हबो बुझियला 0 रो जेतला स्टार्टिंग होउची तमरो -15 हले कोज डायरेक्शन हे जीवो नेगेटिव एटा होची नेगेटिव एक्सिस तो रहला 15 बुझियला 15 नो से जीवो अगेन केते कवर करियो 17 कवर कला एठी 15 कवर कला एठी 17 कवर कला अच्छा एउठू को जेतला आसीबो ए जगह को पुनी ओरिजिन को आसीबो ना ए जो जगह से कवर कला 17 को कवर कला +2 को कवर करके ठीक आसीबो आउ थरे मु फिगर टा कर दोची बुझिबो हला तीनटा पोजीशन दोची ये हला हमर स्ट्रेट लाइन रहला बुझियला ये गोटे पोजीशन रहला एटा केते रहला -15.0 रहला बुझियला एबे गोटे पोजीशन नबा ए जगह रे मु गोटे पोजीशन नउची एटा -2.0 नउची बुझियला एटा गोटे फाइन x रो पोजीशन नउची ए जगह पोजीशन नउची x इज इक्वल्स टू 0 ए जगह रे रहला ए पोजीशन 17.0 प्रथमे क्वेश्चन दला ए पार्टिकल ट्रैवल्स फ्रॉम -15 टू 17 -15 टू 17 से ट्रैवल करियो तो -15 टू 17 ट्रैवल कले कौन हो ओरिजिन को आसिले केते से ट्रैवल कला 15 15 प्लस 17 एबे आसिला केते 17 पुनी कवर कला केते 2 हैला आंसर बुझी पाइला कथाटा एठू गला 15 प्लस 17 17 को पुनी एठी आसिला पुनी 2 कवर कला हैला 51 बुझी पाइलो क्वेश्चन टा बुझिले ନାଇଁ ନାଇଁ ଏ ଋଣ ନାଇଁ ଏଇଟା ଦେଖ ଏଇଟା ବା ଅରିଜିନ ଦେଇଛି ଫିଗର ଟା ବୁଝେଇ ତମର ଅରିଜିନ କୁ ନେଇକି कैलकुलेट हो ऑरिजिन नु एपटे जी रहेगा से माइनस समझ में आ रहा है इसमें जो रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा ये क्या बोल रहा है -15 से शुरू किया तो ऑरिजिन तक जाएगा 15 कवर किया तो उसके बाद 17 कवर किया तो 15 + 17 रहा उसके बाद फिर वापस आया 17 उसके बाद पहुंचा कहां पर 2 पर पहुंचा तो 17 + 2 टोटल कितना हो गया 51 मीटर क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन which of the following distance travel এটা ব্র্যাকেট রইলা s distance travel s versus distance and time graph distance and time graph okay distance and time graphs not possible distance and time graph is not possible so one question is what it is t it is s this t and s okay so here it is one position or another it is one position okay distance and time graph it is a t s and t it is one another graph is this one it is distance and it is time another graph is what okay it is s b and t so which one is possible
not possible. Acha, so here we place the two time that it a position ne a time ne body টা এটি move করা, speed is this position, when you are this position distance is same. Okay, यहाँ पर ग्राफ पॉसिबल है. Okay, because distance that you travel is not decrease with time, तो ये ठीक है, तो ये पॉसिबल है. So now what happened? Now what happened? It is position here. Okay, and here we are in this position. Huh? Why possible? Huh? Okay, and here এটা পসিবল কি পসিবল নো? পসিবল নুহে. So third one is the correct answer. Okay, বুঝবাইলো পছলা মুন্ডারে? হ্যাঁ, okay, write another question. Two train are 50 kilometer apart. Two train stations are 50 kilometer apart. One afternoon, রচনা লেখো. One afternoon, two train, কেমনি কোশ্চেন কনফিউজ করিব দেখো. Two train starts towards each other. One from the station. Sorry, कौन लिखिला? One afternoon, two trains starts towards each other. One from each station. One from each station. Just as the trains pull out of the station, a bird springs into the air. A bird springs into the air in front of fast train. In front of fast train. A bird springs into the air in front of
fast train and flies to the front of second train when it reaches when it reaches the second train when it reaches the second train in it turns back it turns back and flies towards the fast train flies towards the fast train ଲେଖି ପାଇଲୁନୁ କୋଉଠି ଛାଡିଲୁ ଦେଖ ଆଉ ଥରେ ଡାକି ଦେଉଛୁ two train stations are 50 km apart. One afternoon, two trains start towards each other, one from each station. Just as the train pull out of the station, a bird springs into the air in front of first train and flies to the front of second train. When it reaches the second train, it turns back and flies towards the first train. ଦେଖିଲୁ ଆଉ ତୁ କୋଉଠି ରହିଲୁ କହୁନୁ pull out of the station a bird springs into the air a bird springs into the air in front of fast train in front of fast train and flies to the front of second train when it reaches the second train it turns back and flies towards the fast train. The bird continues to do this until the trains meet. The bird continues to do this until the trains meet. If if both trains travel at the rate of 20 kilometer per hour and the bird flies at 100 kilometer per hour देखिल how many kilometer will the bird have flown before the trains meet না এটা হচ্ছে কোশ্চেন আর আনসার নিয়ে দিপে যাওয়া কথা আর আনসার সেটি ফিগরটা করিবা স্টার্ট করিব যেতবে তুমি ফিগরটা আকুরেট করিদব তোমার প্রবলেমটা সেটি সলভ হয়ে যাবে বুঝিলা লম্বা প্রবলেম দেখিকি ডরিবনি আচ্ছা এবে আসিবা আমার
ସେ ଦେଲା ଯେ two train stations are apart from 50 kilometer. ତ ଏଠି ଗୋଟେ ଟ୍ରେନ ରହିଲା, ଏଠି ଗୋଟେ ଟ୍ରେନ ରହିଲା, ବୁଝିଗଲା। ଏଇ ଯୋଉ ଟ୍ରେନ ଭିତରେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଟା ହେଲା 50 किलोमीटर, डिस्टेंस ହେଲା 50 किलोमीटर। ओके, one in a evening, one afternoon, two train starts towards each other। ଦି ଜଣ ଜାଗାକୁ ବାହାରିଲେ, ସେ ସେପଟୁ ବାହାରିଲା, ଇଏ ଏପଟୁ ବାହାରିଲା। ଓକେ, so a bird springs into the air in front of the first train। ଗୋଟେ ବାର୍ଡ ଆସିଲା, ସେ ପ୍ରଥମ ଟ୍ରେନ ଆଗକୁ ଆସିଲା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟ୍ରେନ ଆଗକୁ ଆସିଲା, and springs into the air in front of first train and flies to the second। इधर उधर इधर उधर करता गया। It turns back and flies towards the fast train। The bird continue to do this until the train meets it। Okay, so till the train is not facing the accident, till that timing the bird is moving। Okay, if the both the train are travel at the distance at the rate of 25 kilometer per hour, distance is 50, it travel 25 kilometer per hour, it also travel 20 kilometer per hour, distance is 50, it travel 25 kilometer hour, it travel from 25 kilometer hour, so 25 kilometer per hour। हाँ हाँ, ये भी मूव करছে 25, ये भी मूव करছে 25, তাহলে অ্যাক্সিডেন্টটা কোটি হবো? नहीं 25 25 25, नहीं 25 25 25। ମୁଁ ଲେଖିଛି ଯେ if the train travels at the rate of 25 kilometer per hour। ओके 25, तो ये भी 25, ये भी 25, डिस्टेंस है 50, एक्सीडेंट कोडी हो, so in between accident हो। ओके, सो द bird is flying। ओके, खतरों का खिलाड़ी ଯିବ, ସେପଟେ ଯିବ ଆସିକି ତାକୁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କରେଇଦବ। ଖତରଙ୍ଗା ଖିଲାଡି ନାହିଁ, ଡେଇଁ ପୋକ ମାରିବ, ଇଏ ସେମିତି ଖତରଙ୍ଗା ଖିଲାଡି ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରେନ ଦିଟା ମିଟ୍ କରିବ, ବାରଟା କଣ ହବ? ରେଷ୍ଟ ଇନ ପିସ୍ ହବ। ବୁଝି ହଉଛି, ଧକ୍କା ହେଲେ ରେଷ୍ଟ ଇନ ପିସ୍ ଯିବ। ଓକେ, ସୋ ଦ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଆମେ ପାଇବା, ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଟା କେତେ ଆସିବା? ତ ଏ ମଝିରେ ସେମାନେ କଣ ହବ? एक्सीडेंट हो। ये 25 किलोमीटर, ये 25 किलोमीटर दा ट्रैवल କରୁଛନ୍ତି। So if this train is travel 25 kilometer, travel in 25 kilometer, then the train is meeting or they face the accident। So what is the distance they travel? So DA is equals to 25 kilometer। Yes or no? Velocity, velocity is also 25 kilometer। Okay, then the velocity of bar distance is equals to, तो हमें कौन बाहर करिवा? Distance is equals to velocity into time। ओके, that is distance into एटा केते आसिला? t आसिला। तो velocity हमर केते आसिला? त बार रो स्पीड केते आसिला? 100। केते सेकंड से ट्रैवल करूची? ट्रैवल 100। देखो एटा हमें बाहर करबा t
in 1 hour. So that is what? 100 kilometers per hour. Okay. And
13 meter away from the start. From the start. From the start. ମଦୁଆ ଲୋକ ଦେଖିଛ ଦେଖିଛ ହଁ ବଢିଆ ଗାଡି ଚାଲନ୍ତିନି ହଁ ବୁଝିପାରିଲନି କୁହ ନ ବୁଝିପାରିଲେ ପଚାର। ଛାଡିକି ବି ଏଇଠୁ ବାହାର କରିବ କାରଣ ସେ 100 ମିଟର ରେ ଯାଉଛି 100 ମିଟର ସ୍ପିଡ ରେ ଯାଉଛି ଏଠି ଗୋଟେ ଗାଡି ଯଦି 100 କିଲୋମିଟର पर ବୁଝିହେଲାନି ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ତାହେଲେ ସେ କେତେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କଭର କରିବ 2 ମିଟର କାରଣ ତାର
ଏଇ ଯାଏ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ 8 ମିଟର ସେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚୁଛି, till to reach this 8 meter, actually the person is covered 32 meter. खड्डे में कितना टाइम लगेगा, और एक स्टेप डालेगा, कितना 5 स्टेप, तो ऐड कर दो 5 मीटर, कितना हो गया 37 मीटर। तो 37 मीटर कवर करेगा तभी जाकर नीचे गिरेगा। इज इट क्लियर? हाँ, क्लियर, क्रिस्टल क्लियर है, बुझीगला केतेटा स्टेप रे सॉल्व होला प्रॉब्लम टा केते बड़ थिला, मजादार जिनस कि नहीं, आउरी अछि एमती मजादार प्रॉब्लम जो नीट जे लेवल अछि करियो। ओके, सो नेक्स्ट क्लास रे तुमको स्पीड आउ एवरेज स्पीड एटा पढेबी, तापर किछि फार्मूला पढेबी, फार्मूला पढेला परे डेरिवेटिव एंड कैलकुलेशन कैलकुलस, एटा नेक्स्ट क्लास रे एटा को पढेबी। नेक्स्ट क्लास इज वेरी इंपोर्टेंट, हमर फिजिक्स रो प्रॉब्लम सॉल्व करिया पई जो डेरिवेटिव कैलकुलस दरकार पड़ियो, से डेरिवेटिव कैलकुलस मु नेक्स्ट क्लास रे कवर करबी। ओके ओके, सो नेक्स्ट वीक रो सैटरडे दिन 80 सर क्लास नेबे, बट इन बिटवीन द टाइमिंग पे हमर सेकंड सिलेक्शन परे परे, so some of the classes or some of the days you face the 3 hour to 4 hour of classes, आस्ते 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 मु टाइम इंक्रीज करबी। ओके, मु एबे 2 2 आवर्स किबा 2 आवर्स चलती, तो आस्ते 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 मु टाइम टा इंक्रीज हो। तो नेक्स्ट यहाँ पर हाँ हाँ हाँ, या আস্তে 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 টাইমটা ইনক্রিজ হবে। ওকে, সো বি প্রিপেয়ার ফর ইট, সেকেন্ড সিলেকশন পরে আফটার 10, তো এটা আউরি টাইমিং তোমাকে আউরি অধিক দেওয়া পড়বে। ওকে, চলো, সো